Hello, everybody. Welcome back. We continue with our discussion on unit number 1 of the NCRT, which is diversity of life. Reminding you that there are 4 chapters under this unit, and we have already finished one chapter, that is Kingdom Plantae. Now we would like to start with another chapter, which is Kingdom Animalia. Now, as I had indicated earlier also, that we are discussing the 5 kingdom system of classification: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. बराबर ना? उसमें से the first 3, that is Monera, Protista and Fungi, will come in chapter number 2. Chapter number 3 is Kingdom Plantae, which we have already done, and chapter number 4 is Kingdom Animalia, which we are starting now. Clear, please? Now, before we start with Kingdom Animalia, the actual classification, there are some terms which we would like to get acquainted with, right? Which would keep on coming as characteristics of these animals. So before we get, there are about 7-8 points which are under the scope of this discussion. So the first video is only about talking about that initial part, right now. So the first we're going to talk about these terms. Now let's introduce Kingdom Animalia. Now Kingdom Plantae में ये diagram already मैं आपको दे चुका हूँ. This is called as the phylogenetic tree, right? This is representative of the 5 kingdom system of classification given by Whitaker. At the base of the phylogenetic tree is Monera, right, which comprises of bacteria, right? All bacteria come under Monera. उसके ऊपर आता है Protista. Now, can you see the corresponding diagram here also? Monera में you have Eubacteria and Archaebacteria. As we come to Monera, we will study the classification also. राइट प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस है भाई? यहां पर दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक. प्रोटिस्टा ऑल्दो यूनिसेलुलर इज यूकैरियोटिक, देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज प्रॉपर, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटिस्टा, राइट? नाउ सम ऑफ द प्रोटिस्ट्स हैव फीचर्स लाइक एनिमल्स, दे आर हेटेरोट्रोफिक. Some of the protists, they have features like plants, they can do photosynthesis. Some of the protists have features like fungi, they are saprophytic. So the animal-like protists have evolved into Animalia. The plant-like protists, as I told in the previous chapter, have developed into Kingdom Plantae, and the same for Kingdom Fungi, right? So when we studied Kingdom Animalia, right, just to make some point a little clear, when we studied Kingdom Animalia, we started with amoeba. I'm talking about something in 1985-86. We started with amoeba and we used to study phylum Protozoa. But gradually, as the classification expanded, became more and more refined, this was no longer considered as an animal. It was pushed down into Protista. So जब हम लोग Protista पढ़ेंगे तो amoeba paramotion वाला example अपने को animal like Protista में आएगा. Animal like Protista. That's why Protista as a kingdom was developed, so that these loose organisms right now, which could not be really defined as a plant or an animal or a fungus, could be put into that particular group, right? So animals are eukaryotic, multicellular heterotrophs that lack cell wall, right? This is the single point differentiating plant and animals, right? सबसे पहला, plants have got cell walls and animals do not have cell walls. Heterotrophs, right? Heterotrophs are organisms which depend on others for their food. Heterotrophs में you can even have those who depend on other living organisms, तो ये parasites हो जाएंगे, right? Others who depend on dead organisms, तो ये हो जाएंगे saprophytes. लेकिन ये fungi का feature है, not for animals, right? Animals are always dependent on others because
they do not have the photosynthetic pigment and they cannot do photosynthesis, hence they have to depend on others for food. Capable of locomotion और body movement. Now देखो यहाँ पे दो words है, movement भी दिया हुआ है और locomotion भी दिया हुआ है, right? Locomotion तब बोलेंगे जब there is displacement from point A to point B, right? Sorry थोड़ा सा physics लेके आया बीच में मैं, right ना? So when a thing moves from point A to point B हम लोग बोलते हैं locomotion हुआ है, लेकिन point A पे खड़े खड़े अगर बॉडी का movement होता है, right ना? So animals are capable of movement also and locomotion also. We will see lower organisms में movement मिलता है, लेकिन higher organisms के अंदर locomotion भी मिलता है, right? Please. So there will be organisms which are sessile, which are attached to a substratum, right? किसी layer को attached है and they show tentacles and movement and they can catch organisms, right? So इसमें locomotion नहीं होगा, इसमें movement आ जाएगा, ठीक है? They possess nervous system and specialized sense organs for coordination of different systems. Now, this is what sets apart animals from plants, right? See, अगर common factor दोनों में देखना है ना coordination का, तो animals और plants दोनों के अंदर hormones मिलेंगे अपने को, right? Plants में you've done plant hormones, right? You know the 5 hormones which are governing the action of plants. Animals also have hormones for various functions. But apart from that, coordination के लिए, right now, to interact with the environment, animals have got nervous system, right? So it is a nervous system which coordinates between different systems and brings about a perfect response against the environment, right? So this is a key feature for kingdom Animalia, presence of a well-developed nervous system. Obviously well-developed ka it will keep on developing as the kingdom keeps on evolving. Most of the animals reproduce sexually by producing gametes, right? Lower organisms may we will find that there is a section of animals which reproduce asexually also. But as we keep on going higher up the order in Animalia, we find sexual reproduction becomes more pronounced than asexual reproduction. Okay, I hope these points are clear. Now coming to the classification, right? Animals, see ये animal की जगह पर I would prefer reading kingdom Animalia, right? Now when we did families in morphology, right? You can even stop and take a reference. I had given you 7 obligatory categories, right? जब family वाला category पढ़ा था मैंने कि classification में there are 7 obligatory categories starting from kingdom ending to species, right? ना kingdom, phylum, right? Class, order, family, genus, species. तो ये 7 जो है ना वो obligatory categories है. So here we start with kingdom Animalia. Kingdom के नीचे वाला जो category है, नीचे का level है वो है phylum. But since we are dividing animals, right ना हर एक division के लिए criteria चाहिए अपने को. We are classifying animals on the basis of presence or absence of a dorsal supporting rod called as notochord. So we have non-chordates and chordates. Now see, this is the classification that we have learned right from school, right? Animals are either non-chordates or chordates. Please, invertebrates और vertebrates थोड़ा सा refined हो जाएगा, आगे आएगा जब हम लोग vertebrata करेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे, please. यहाँ non-chordates and chordates depends on whether they have a dorsal supporting rod or not, right? Now, under non-chordata, please be very careful of this classification. Under non-chordata, we have phylum Porifera, right? So we will be studying animals like Cycon and Spongula, right? See, a phylum itself is very big. Phylum के अब हम लोग phylum Porifera है तो phylum के नीचे class आएगा, class के नीचे order आएगा, order के नीचे family, family में genus, species, no, you will have. So a phylum is a very big category.
It will include a very large group of animals. But when we have to study classification, we have to study one or two animals which are best representing that particular category. Right? For example, when we did Plantae में Pteridophyta पढ़ा तो हमने fern पढ़ा, है ना? Bryophyta में moss पढ़ा हमने, because they best represent that category. Right? So please be careful about this point. Then comes phylum Coelenterata or Cnidaria, which includes animals like Hydra, right? Jellyfish, all they come under Coelenterata. Phylum Ctenophora, right? One of the phylums which has got very, very small number of species, right? So we have sea gooseberry, sea walnut. Then we have two helminth. Helminth का मतलब होता है worm. So platyhelminth. Platy means flat. So platyhelminth का मतलब होता है flatworms. Flatworms. Aschelminthes. Asch का मतलब होता है round. Helminth worms. So they are called roundworms. It is also called nemathelminthes या उसको nematodes भी बोलते हैं हम लोग. Phylum Annelida, best represented by earthworms. Arthropoda, we've already done cockroach, so no need to talk about that. Mollusca, right, very well represented by snail, right, octopus, squid. Now these are organisms under Mollusca. Echinodermata, starfish, Hemichordata and Chordata. Please see, this is where you have to be a little careful. Under kingdom Animalia, there are how many phyla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Chordata kingdom Animalia में phylum है, phylum के लेवल पे ही है, राइट ना? लेकिन यहां पर हमने क्लासिफाई नोटोकॉर्ड के बेसिस पे किया, इसलिए ये दो अलग अलग कॉलम है. अगर किंगडम एनिमेलिया वाला कॉलम बनाता तो यही फाइलम कॉर्डेटा ये 11 नंबर पे नीचे डालता मैं. ठीक है प्लीज. हाँ, यहां पर हमने क्राइटेरिया नोटोकॉर्ड यूज किया है, इसलिए ये दो अलग अलग कॉलम में है, वरना यही फाइलम नीचे आएगा. ठीक है प्लीज. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइलम पॉरीफेरा अप टू फाइलम कॉर्डेटा, these are 11 phylums that we have to investigate in this chapter with respect to their features, development, fertilization, reproduction, examples, if possible any classes. I know it is going to be a tad difficult, but we are going to pull through. Don't worry about that. Okay. Right, so this is just to give you a bird's eye view of what we have to do in this particular chapter. Right, अब हम लोग वो टर्म्स पे आते हैं कि हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना है ये चैप्टर पढ़ते वक्त. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज विथ मी. First is level of organization. Now see, this I have picked up right from the NCERT. NCERT का डायग्राम है level of organization. ये रहा देखो. Now, biological organization starts from cell, right? You have studied tissue पढ़ा है तो सर ने डेफिनेटली किया रहेगा कि सबसे जो छोटा लिविंग यूनिट है वो है सेल. सेल के बाद आएगा टिश्यू, टिश्यू के बाद आएगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म. है कि नहीं? सो यू विल फाइंड सम ऑर्गेनिजम्स एट द सेल्यूलर लेवल, सम ऑर्गेनिजम्स एट द टिश्यू लेवल, some at organ, some at organ system, and so on so forth. So this is the first criteria कि कौन सा level of organization है organism का. Now if you look at the diagram, cellular level पे सिर्फ porifera है, बाकी जितने Coelenterata से लेके Chordata, everybody is at either tissue, organ or organ system level. So if I have to differentiate porifera, one point is enough for me, that it is the only organism at the tissue level of organization. Right? So understand what is level of organization. So in sponge, the cells are arranged as loose cell aggregates. Right? So collection, aggregate का मतलब क्या होता है? Collection. They exhibit cellular level of organization.
सम डिविजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग्स द सेल्स, मतलब ये एक ग्रुप कुछ और फंक्शन कर रहा है, ये एक ग्रुप और फंक्शन कर रहा है। सी ग्रुप ऑफ सेल होता है तो हम लोग उसको टिश्यू बोलते हैं, लेकिन यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल फंक्शन तो कर रहा है लेकिन उसको टिश्यू बोलने जितना डिफरेंस नहीं है उन लोग में, इसलिए यहां पर वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड टिश्यू। हाइड्रा में हम लोग टिश्यू यूज करेंगे, यानी सीलेंट्राटा आएगा तो टिश्यू लेवल हो जाएगा उसका। इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, the cells are performing the same function as arranged into tissues, so उसका tissue level of organization हो जाएगा। A still higher level organ is exhibited by members of platyhelminthes, flatworms and other higher phyla, right? तो यहां पर क्या होगा, you will find presence of organs, right? जैसे कि flatworms में if you remember protonephridia हमने पढ़ा था excretion में, right ना, प्लेनेरिया वगैरह में, राइट ना, देयर इज अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, सो दैट इज ऑर्गन सिस्टम। इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, मतलब हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी, वी आर गोइंग हाई अप द लेवल, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म सिस्टम, सो दिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा अभी, राइट ना, सो दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गन सिस्टम में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेलमिंथेस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, राइट, सो इनटेक एंड आउटपुट इज बोथ फ्रॉम द सेम ओपनिंग, सो जहां पे माउथ एंड एनस आर द सेम, यू से द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। A complete digestive system will have two openings, mouth and anus, right ना। लास्ट पॉइंट जब पढ़ेंगे ना हम लोग कि उसका बॉडी प्लान क्या होता है, वहां पे हम लोग ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेशन को भी लेके आएंगे। अगर डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट है मतलब एक पूरा ट्यूब अंदर से माउथ से एनस तक, उसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। सो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैन ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया। Circulatory system, obviously we know it can either be open or closed. We have already studied open in case of cockroach, where the circulating fluid is in contact with the tissues, and enclosed, the circulating fluid will always be enclosed in vessels like arteries and veins, ठीक है ना। So this is the first point which talks about के organ level क्या है, level of organization क्या है। So when you start studying different phyla, you will find one statement, हाँ, this is an organ level, this is a tissue level, like that. Okay. The second point talks about symmetry, right? I'll just, the second point is talking about symmetry. Animals can be categorized on basis of their symmetry, right? अब असिमेट्रिकल तो ठीक है, समझ में आ गया कि भाई इट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी गिवन प्लेन, सो इट इज असिमेट्रिकल, राइट। अमीबा इज असिमेट्रिकल। इफ एन एनिमल कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स एट लीस्ट फ्रॉम वन प्लेन, फिर वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, राइट। अब सिमेट्री में ऑलरेडी हम लोग मॉर्फोलॉजी में तीन टाइप की सिमेट्री, असिमेट्रिक के अलावा दो टाइप पढ़ चुके हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, और वहां पर हमने इसको एनिमल सिमेट्री से भी रिलेट किया था। ये देखो रेडियल सिमेट्री, राइट ना, ऑरेलिया, ये देखो ऑरेलिया का नीचे वाला पड़ा इधर तुम्हारा जेलीफिश का नीचे ऑरेलिया, राइट ना। सो आई कट फ्रॉम एनी प्लेस इट डिवाइड्स इनटू टू, सो दैट काइंड ऑफ अ सिमेट्री इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिमेट्री, right? So but animal plants में it is corresponding to actinomorphic. Bilateral symmetry, right? Body can be divided in only one plane, सिर्फ one plane, right? Either horizontal, vertical, एक plane से आप divide करो तो body can be divided into two equal halves. So we say it is bilateral symmetry corresponding to zygomorphic in plants. But animals में we find one special type which is called as the spherical symmetry, found in eggs and early embryos of some animals that have a ball-like body, right? So it can be divided into similar halves by any plane passing through the center.
तो उसको हम लोग स्फेरिकल या यूनिवर्सल. सो व्हेनेवर यू हैव अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, द सिमेट्री डिस्क्राइब्ड विल बी अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल सिमेट्री. ठीक है. ऑब्वियसली देखो क्या लिखा है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, द साइड्स ऑफ द बॉडी आर यू कांट टेल कि डोर्सल कौन सा और वेंट्रल कौन सा, बिकॉज इट्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट अपना है सिमेट्री. पहला पॉइंट अपना क्या था? द फर्स्ट पॉइंट वॉज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज सिमेट्री. थर्ड पॉइंट जर्माइनल लेयर्स. राइट. व्हेन a zygote is formed, zygote starts dividing mitotically to form an embryo, right? So now we have done chapter on reproduction, so it is easy for me to talk about the development of embryo. Embryo starts developing and gets arranged in the form of germinal layers, right? Now lower animals will have 2 germinal layers, higher animals will have 3 germinal layers, right? So when the organism has developed from 2 germinal layers, only ectoderm and endoderm, mesoderm missing hai, we say it is a diploblastic organism, right? Diploblastic organism. External ectoderm, internal endoderm, bas, right? If you can see this pinkish patch here, दोनों के बीच में you have a mesoglia. You have a mesoglia. Undifferentiated layer mesoglia is present between ecto and endoderm. ठीक है. लेकिन as animals move higher up the order, there is a third germinal layer between the endo and the ectoderm, which is called as the mesoderm. Now this development is quite gradual, right? So see, when the animal जब मीजोडम डेवलप होता है तो अंदर एक बॉडी कैविटी डेवलप होती है. नेक्स्ट पॉइंट अपना बॉडी कैविटी है सीलम. तो उसके बेसिस पे भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. सो यहां पर अपने पास सिर्फ 2 पॉइंट है, राइट ना. अगर 2 जर्माइनल लेयर से डेवलप हो रहा है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्माइनल लेयर है, मिडिल मीजोडर्म है, तो इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज सीलम, राइट. अब एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ये देखो, लुक एट द ब्लू लेयर, इट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है. इसका मतलब यहां पर मीजोडर्म इंटैक्ट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर्स है, एंडो है, एक्टो है, मीजो है, तीनों लेयर है. लेकिन मीजोडर्म का कहीं से कोई डिवीजन नहीं हुआ है, मीजोडर्म पूरा का पूरा है, राइट ना. इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है और ये सेंटर में डाइजेस्टिव कैविटी है. तो जब मीजोडर्म स्प्लिट होगा, राइट ना, जब मीजोडर्म स्प्लिट होता है, यानी कैसा कि आधा मीजोडर्म एक्टो को चिपक जाएगा, आधा मीजोडर्म एंडो से. तो जब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो 2 मीजोडर्म के जो पार्ट्स बनेंगे उसके बीच में कैविटी डेवलप होगी, उसको हम लोग सीलम बोलते हैं, राइट. सो इन एनिमल्स, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, वी फाइंड दैट ऑल्दो तीसरा लेयर डेवलप हो चुका है, लेकिन दैट मीजोडर्म, तीसरा लेयर, इज नॉट डिवाइडिंग, सो देयर इज नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट. देन वी से इट इज असीलोमेट, राइट. देखो प्लैटीहेलमिन्थेस तक जो है ना वो सारे असीलोमेट है. अब देखो हाइड्रा वाज डिप्लोब्लास्टिक, तो मतलब सीलम का तो सवाल ही नहीं आता है. प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडर्म है, लेकिन वहां पे डिवीजन नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी से इट इज असीलोमेट. It is असीलोमेट. The space between the body wall and alimentary canal is filled with parenchymatous tissue. ठीक है. अब प्लैटीहेलमिन्थेस के बाद आता है एस्कहेलमिन्थेस, लिस्ट में देखा हमने. फ्लैट वर्म्स के बाद आता है राउंड वर्म्स, राइट. अब when you progress to round worms, what do you find is mesoderm split होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पैचेस में, राइट ना. पैचेस में मतलब कहीं mesoderm डिवाइड हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, पैचेस में डिवाइड हो रहा है. सो नाउ कैविटी तो स्टार्ट हुआ है लेकिन ट्रू कैविटी नहीं है, इट इज अ फॉल्स कैविटी. सो वी से इट इज अ सूडोसीलम.
एस्केलमेंथिस, देखो यहाँ पे एग्जांपल एस्केलमेंथिस ने दिया है. सो पैचेस ऑफ मीजोडर्म आर फाउंड बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, राइट. सो कहीं कहीं पैचेस मिलेगा तुमको मीजोडर्म का. जब मीजोडर्म पूरी तरह से स्प्लिट हो जाएगा ना, राइट ना, सो यू विल हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द स्प्लिटर्म, राइट ना. ओके, सो एस्केलमेंथिस इज द ओनली सूडोसीलोमेट. Aschelminthes is the only pseudocoelomate of the entire animal kingdom. And finally, we come to coelomate, right? So body cavity lined by mesoderm, right ना? So mesoderm जो था वो split हुआ, right? Split हो गया. तो आधा mesoderm गया ecto के साथ में, आधा mesoderm चिपका हुआ अंदर meso के साथ में, right ना? So ये अंदर जो है वो cavity create हुआ है. So ये cavity का पूरा lining क्या है? Isn't the mesoderm? The cavity is lined by mesoderm. So the cavity which is lining, right now, which is lined by mesoderm, that cavity is known as the coelomic cavity. Right? The mesoderm splits into two layers. The outer layer lines the body wall, and the inner layer lines the alimentary canal. Cavity is filled with coelomic fluid. So देखो, mollusca, annelida, arthropoda, echinodermata, chordates, यानी एस्केलमेंथिस के आगे जितने भी है वो सब सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, राइट. सी आगे व्हेन वी स्टार्ट विद फाइलम्स ना, वहां पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन आएगा, राइट ना. ये फाइलम में जो एनिमल्स है दे आर असीलोमेट, दे आर सूडोसीलोमेट, दे आर, वहां पे देयर इज नो एक्सप्लेनेशन गिवन, राइट ना. सो दैट्स व्हाई द प्री हैंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी essential as to what is acylomate, what is pseudocoelomate, and what is coelomate. Clear, please? Okay. Then is segmentation. What do you understand by segmentation? In some animals, body is externally and internally divided into segments, right? Earthworm, right? Earthworm का body हम लोग बाहर से देखेंगे ना तो segments clearly दिखते हैं अपने को, right? कॉकरोच हमने पढ़ा है, कॉकरोच का body is made into segments, right? thorax में 3 segments है, abdomen में 11, but the 10th and 11th are fused. We see segments, isn't it? And on the basis of segments, we can distinguish also. But earthworm में क्या है कि when you open up the body of the earthworm, internally also you can see the segmentation. Internally also you can see the segmentation. So external segmentation and internal segmentation are coinciding with each other, right? उसको बोलते हैं metamerism. उसको बोलते हैं metamerism, and this is, we say it is metamerically segmented, right? Very typical feature of annelids and arthropods, and earthworm is a very very prominent example. See, I've got try to give a diagram. ऊपर से segmentation दिख रहा है, अंदर से divisions भी दिख रहे हैं, देखो segments के, right? So ऊपर से जो segmentation का curve आएगा वो अंदर जाके भी divide करेगा. So internally भी segmentation का division अपने को मालूम पड़ता है. So that is called as metamerism, right? So we say earthworm is a metamerically segmented animal. Finally, we have notochord. Notochord is a mesodermally derived, right ना? तो development उसका है mesoderm से. Rod-like structure formed on the dorsal side, पीछे, during embryonic development. So animals with notochord are chordates, and those which do not have are non-chordates. That was the first criteria of our classification: non-chordates and chordates, right? Chordates के अंदर you have vertebrata and invertebrata. Please, huh? Those which have vertebral column are vertebrates. Those chordates where vertebral column नहीं develop होता है are invertebrates. Please do not please get confused between these two. Okay. The last point is animal body plan, right? So what kind of a body plan is present with the animal? 3 basic body plans, as you can see on the screen. Cell aggregate plan, simplest, जो sponge में देखने को मिला था अपने को. Cell aggregate, all the cells are showing aggregation, right? ना साथ में जमा है लेकिन टिश्यू नहीं बन रहा है. Least division of labor. Cell do not form tissues, no organs, right? ना phylum porifera देखो लिखा है यहाँ पे, it belongs to this category. So वहां पे phylum porifera में it has got cell aggregate plan.
right? So when we come to these terms right now, it should be very clear to us that what is the chapter talking about. Blind sac body plan, right? Digestive cavity with a single opening, right? If you remember, जब हमने Bowman's capsule पढ़ा था, तो I had taught you the meaning of the word blind, right? Blind मतलब जिसका एक ही ओपनिंग हो, दूसरा ओपनिंग ब्लॉक्ड. सो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही ओपनिंग है, माउथ एंड एनस एक ही है. So that is called as blind sac body plan, incomplete digestive system, right? Members of the phylum Cnidaria, they belong to this body plan. They have blind sac body plan. Tube within tube, एक बार तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, माउथ और एनस डेवलप हो गया, दैट मीन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज अ स्मॉल डाइजेस्टिव ट्यूब रनिंग. The body wall becomes outer tube. The digestive alimentary canal becomes the inner tube. So what kind of a body plan that becomes? It is a tube within a tube. So which is the inside wala tube? The alimentary canal is the inside wala tube. Which is the outside tube? The body wall is the outside tube. So three types of body plan we have. Number one, we have the cell aggregate. Second, we have the blind sac body plan, and third, we have the tube within tube body plan, right? These are some of the initial terms that you need to be familiar with, right? So as we go on to different phyla, right, we will be talking about these terms and the other characteristics and features also, right? Thank you all.